Hi, so this is the last week of June, and we are going to start with the GA plus finance section. Annual review of public sector banks. Net NPA जो है fell to multi-year low of 0.52%. Net NPA जो है बैंकिंग सेक्टर का वो गिर के 0.52% हो चुका है. रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट PSBs posted a net profit of 1.78 lakh crore. ठीक है, PSBs were encouraged for participation in GIFT City and the India International Bullion Exchange. Public sector banks were encouraged for participation in GIFT City and the India International Bullion Exchange. Unified Lending Interface. The Union Finance Ministry and Reserve Bank of India held a meeting with central and state officials to discuss the scaling up of the Unified Lending Interface. Union Finance Ministry and Reserve Bank of India, developed by our Reserve Bank of Innovation Hub. ठीक है, RBI Innovation Hub. फिर है जियो BlackRock Broking. So Geo BlackRock Broking Private Limited has received approval from SEBI to commence operations as a stockbroker. Geo BlackRock Broking is a wholly owned subsidiary of Geo BlackRock Investment Advisors Private Limited, a 50-50 joint venture between Geo Financial Services Limited and BlackRock Incorporation. Geo BlackRock marking the US-based asset manager's re-entry into the Indian market after it exited in 2018 by selling its stake in DSP BlackRock Mutual Fund. ठीक है, तो Geo BlackRock marking the US-based asset manager's re-entry into the Indian market after it exited in 2018 by selling its stake in DSP BlackRock Mutual Fund. ठीक है, उसके बाद है RBI का 7-day variable reverse repo rate auction to manage liquidity. RBI has announced a 7-day variable rate reverse repo auction worth 1 trillion rupees to manage surplus liquidity in the banking system. According to RBI's liquidity framework, liquidity operation of 14 days and above are called main operation, and that of less than 14 days are called fine tuning operations. ठीक है, 7-day variable reverse repo auction worth 1 trillion to manage surplus liquidity in the banking system. ठीक है, RBI का e-rupee CBDC. The RBI central bank digital currency, the e-rupee crossed 1,000 crore in circulation by March 2025. 1,000 करोड़ का CBDC सर्कुलेशन हो गया है. Used for interbank settlements and secondary market transactions in government security. It does not earn interest unlike bank deposit. ठीक है, and donations exceeding 2,000 rupees made in digital rupee may not qualify for tax benefits. ठीक है, तो टैक्स बेनिफिट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा अगर डोनेशंस एक्सीडिंग 2,000 रुपीज है. रिसीविंग और रीपेइंग लोन्स और डिपॉजिट एक्सीडिंग 20,000 इन अ डे यूजिंग ई-रुपी कुड बी प्रोहिबिटेड. ठीक है, 20,000 से ज्यादा एक दिन में रिसीव या रीपे नहीं कर सकते लोन या डिपॉजिट. RBI guidelines on AEPS आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट ऑपरेटर्स. ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट क्या है? एक्वायरिंग बैंक्स मस्ट कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव ड्यू डिलिजेंस ऑफ AEPS touch point operators, including bank business correspondent and bank mitras, aligned with RBI's 2016 KYC norms. One bank rule: each Aadhaar-enabled payment system touchpoint operator will be allowed to work with only one acquiring bank. ठीक है, each AEPS touchpoint operator सिर्फ एक ही acquiring bank से बात करेगा. Enforced by both NPCI and banks. Enforced by both National Payment Corporation of India and banks. Mandate compliance. All Aadhaar-enabled payment system participant must comply with operational rules issued by NPCI under the Payment and Settlement System Act 2007. NPCI has set a maximum amount to transaction of 10,000 on a single APS transaction, financial transaction. ठीक है, यूपीआई फीचर क्या है? यूपीआई सरपासेस वीजा एंड डेली ट्रांजैक्शन. तो पहले यूपीआई आ गया है, फिर वीजा, फिर मास्टर कार्ड. तो यूपीआई का फीचर है ओपन लूप इंटरबैंक सिस्टम. तो इसका मतलब है एवरी ट्रांजैक्शन कैन इन्वॉल्व मल्टीपल बैंक्स एंड इंटरमीडियरीज. ठीक है, ओपन लूप इंटरबैंक सिस्टम है मतलब बहुत सारे मल्टीपल बैंक और इंटरमीडियरीज के बीच में ये ट्रांजैक्शन हो सकता है. वीजा एंड मास्टर कार्ड ऑपरेट ऑन अ डिफर्ड सेटलमेंट मॉडल वाइल यूपीआई प्रोवाइड्स रियल टाइम फंड सेटलमेंट. ठीक है, ये डिफर्ड सेटलमेंट मॉडल है, यहाँ तुरंत होता है रियल टाइम फंड सेटलमेंट. वीजा एंड मास्टर कार्ड ट्रांजेक्शन्स आर मोस्टली क्रेडिट, वेयर एज यूपीआई इज अ डेबिट पेमेंट इंस्ट्रूमेंट. एनपीएसए के बारे में पता है? एस्टैब्लिश्ड इन 2008, पेमेंट अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 बाय आरबीआई एंड आईबीए. ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है? सपोर्ट द इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ एटीएम अक्रॉस इंडिया.
एंड इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज जो है enables customers to send money immediately between bank accounts by using MMID। ठीक है, IMPS जो है enable customers to send money immediately between bank account by using MMID। एनपीसीआई का जो इंटरनेशनल जो सब्सिडियरीज है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इट एक्सपेंड्स यूपीआई एंड रुपए ग्लोबली। एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड मैनेजेस डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डिजिटल बिल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एनबीबीएल एंड एनआईपीएल एक्सपेंड्स यूपीआई एंड रुपए ग्लोबली। As of May 2025, NPICI has 65 shareholders including public, private and foreign banks। ठीक है, तो 65 shareholders है इनका। That is all।